इस वक्त की बड़ी खबर का तो देखिए, जो स्टेट लंच पार्टी थी उसमें शामिल होने के लिए मोदी पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको कमला हैरिस दिखाई दे रही हैं, एंटनी ब्लिंकन दिखाई दे। And to really understand the love of good idli. And we traveled to visit my grandparents in what was then called Madras. And I will tell you, my grandfather was one of the most favorite people in my life. Truly. We were pen pals, in fact, throughout my childhood. And I was the eldest grandchild. And so, as I'm sure many of you know, culturally, to be the eldest has a certain significance. And so I took full advantage of that status in our family. And my grandfather, of course, convinced me, as he did, I think, every one of his grandchildren, that we were his favorite. Yet, on those visits, I was the only member of our family that my grandfather allowed to join him for his morning routine. You see, by the time that we were going there as children, my grandfather was retired from his career as a civil servant. And his morning routine, every morning, consisted of taking long walks on the beach with his retired buddies. And they, as retired civil servants, would debate the issues of the day. So I would hold my grandfather's hand on these walks and listen intently to him and his friends. And I will tell you, as a young girl, I don't think I fully appreciated the essence and the import of the debates that they would have. But I did clearly understand and do recall stories about the freedom fighters and the nation's founding heroes, and about the independence of India. I remember them talking about the importance of fighting corruption and fighting for equality, regardless of one's belief or caste. Throughout these walks, I recall my grandfather teaching me lessons about not just what it means to have a democracy, but to keep a democracy. And I do believe it is these lessons ये that लाइव I तस्वीरें आप learned व्हाइट हाउस से देख रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की कमला हैरिस अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रही किस तरह से उनके ग्रैंडफादर एक सिविल सर्वेंट होने के बावजूद परिवार को पूरा वक्त देते थे। और कमला ये कह रही हैं कि जब भी मौका मिला वो अपने दादा के साथ भारत के दौरे पर गईं। और उन्होंने बताया कि उनके जीवन में परिवार के जितने भी सदस्य थे, उन सब में उनके ग्रैंडफादर, उनके दादा, उनके सबसे प्रिय थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि बचपन की बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से सीखी, चाहे वो अच्छे व्यवहार की बात रही हो, चाहे पढ़ाई पर फोकस करने की बात रही हो, या मॉर्निंग रूटीन जो डेली फॉलो करना चाहिए, वो जो सीख है उन्हें अपने ग्रैंडफादर, अपने दादा से मिली। कमला हैरिस ये भी कह रही हैं कि भले वो अमेरिका में बहुत वक्त तक रही, लेकिन भारत उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और ये तस्वीरें स्टेट लंच पार्टी की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंटनी ब्लिंकन जो कि विदेश मंत्री हैं, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वहां पर मौजूद हैं। और टेक्नोलॉजी हैंडशेक के बाद का ये कार्यक्रम था जहां पीएम मोदी पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस में बाकायदा इस लंच पार्टी को आयोजित किया गया। ये स्टेट लंच पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उनका स्वागत करने के साथ साथ अपनी पुरानी यादें जो हिंदुस्तान से जुड़ी हैं उनका जिक्र भी कर रही हैं। सुनिए। I have seen India's global impact firsthand. In Southeast Asia, Indian-made कमला हैरिस कह रही हैं कि जिस तरह से दुनिया में इंटरनेशनल परिदृश्य पर भारत का विकास हुआ है, खासकर इंडिया पैसिफिक रीजन में जिस तरह से भारत ने ग्रोथ की है, उसकी वर्ल्ड इकोनॉमी ने जिस तरह से दुनिया भर की इकोनॉमी को प्रभावित किया है, वो काबिले तारीफ है। A free and open region. I also know of India's extraordinary impact with regard to innovation, medicine, and science. I know कमला this as हैरिस a daughter of विज्ञान का और मेडिसिन का जिक्र करते कह रही है जिस तरह से भारत ने कई सारे नए इनोवेशन, कई सारे आविष्कार किए हैं, वो भी भारत के लिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड हैं, यानी तारीफ के काबिल हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। As a daughter of a scientist, my mother at the age of 19 arrived in the United States by herself as part of the first wave of Indian students. कमला हैरिस बता रही हैं उनकी मां
19 साल की उम्र में अमेरिका आई। ये तब का वक्त था जब बहुत सारे भारतीय जो छात्र हैं वो अमेरिका पढ़ने के लिए आते थे। ये शुरुआत थी अमेरिका आने की भारतीय छात्रों की। उनकी माँ दिन रात पढ़ाई किया करती थी और अपना ज्यादातर वक्त यहाँ तक कि वीकेंड भी लैब में और लाइब्रेरी में बिताया करती थी। To improving the condition of life. She understood what was possible, unburdened by what has been. And since then, I think about it in the context of the work she did and her studies that have led to advances in breast cancer research. And I think about it in the context of the millions of Indian students who have come to the United States. कमला हैरिस कह रहे हैं जिस तरह से उनकी मां की रिसर्च और उनका योगदान ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में एक बहुत अहम भूमिका निभाता रहा, इसके बारे में अक्सर वो सोचती हैं और उनके जहन में ये बातें बार बार आती हैं कि जो भारतीय छात्र स्टूडेंट अमेरिका आ रहे हैं उन्हें वो किस तरह से मदद कर सकती हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी रिसर्च के लिए। Robotics, cybersecurity, climate data, and digital finance. कमला हैरिस कह रहे हैं जिस तरह से भारतीय छात्र लगातार तरक्की कर रहे हैं एरोबैटिक्स में, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट पे जो रिसर्च अमेरिका में भारतीय छात्र कर रहे हैं वो शानदार है। But also to the benefit of the people of the United States and people around the world. So, Mr. Prime Minister, thank you for your role of leadership to help India emerge as a global power in the 21st century. You have helped. कमला हैरिस कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। वो कह रही हैं जिस तरह से उन्होंने काम किया विश्व पटल पर 2021 में भारत को एक नई पहचान, उनके बेहतर काम, उनके बेहतर प्रशासन की वजह से भारत को मिली। And as a point of personal privilege, as chair of the National Space Council, I thank you for your leadership in space and for our joint work. भारत के योगदान जो स्पेस टेक्नोलॉजी में रहा है उसका जिक्र भी कमला हैरिस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कह रही हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से मेडिसिन में और मेडिकल के क्षेत्र में भारत ने काम किया वो काबिले तारीफ है और वो कह रही हैं कि उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें ये वक्त बिताने का मौका मिल रहा है और वो अमेरिकी यात्रा पर एक स्टेट गेस्ट के तौर पर आए हैं। So, Prime Minister Modi, President Joe Biden and I are grateful for your commitment to strengthen the ties and the relationships between the United States and India. And we share that commitment. प्रेसिडेंट जो बाइडेन और खुद कमला हैरिस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे और कमिटमेंट के लिए शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए किया। You and I have advanced cooperation on climate, on clean energy, terrorism, cybercrime, public health, and vaccine production. And during this trip, our countries have launched new areas of cooperation from artificial intelligence to semiconductors. As we look toward the future, कमला हैरिस कह रहे हैं जिस तरह से मेडिसिन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मेडिकल में, डिफेंस इक्विपमेंट में जिस तरह से भारत ने लगातार काम किया है वो उसके लिए धन्यवाद कहती हैं और वो कह रही हैं कि हम भी मेडिसिन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम के मसलों पर लगातार भारत का सहयोग करने और योगदान देने की इच्छुक हैं। And in particular, what he taught me about the nobility of public service. Prime Minister Modi, you and I have both dedicated our careers to the noble work of public service. And so to everyone here today, कमला हैरिस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने खुद अपना राजनीतिक करियर, अपनी जिम्मेदारियां नोबल कॉज में यानी समाज के कल्याण के लिए लगाई हैं। पूरी क्षमता उन्होंने समाज कल्याण में योगदान के लिए की है। The greater good. So I raise a glass. To the enduring bonds between our nations and our people, and to our continued work together, all in the service of the greater good. Prime Minister. Cheers.